सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आइए रही आज की वीडियो। ये स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर होगी। मतलब स्पीकिंग मैं मतलब बोल के दिखाऊंगा मैंने अपना वाला कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, एंड उसके बाद मैं राइटिंग भी खुद लिख के दिखाऊंगा आपको कि मैंने क्या लिखा राइटिंग में, वो सब आपके सामने होगा अभी। तो दिस वीडियो विल कंटेन दीज टू मॉड्यूल्स, स्पीकिंग एंड राइटिंग। एंड इसके बाद मैं रात को बोनस वीडियो भी डालूंगा, वो जरूर देखना। और मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ उसके ऊपर, टिप्स के ऊपर, स्पीकिंग एंड रीडिंग टिप्स। एंड अभी प्रॉबेबली राइटिंग के टिप्स भी आ जाएंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद। तो भूलना मत, बोनस वीडियो और टिप्स वाली शॉर्ट्स देखने का भूलना मत। सो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये अपना स्पीकिंग। एक ऑनलाइन ऐप है, उसके ऊपर मैं अपना स्पीकिंग बोल के दिखाऊंगा कि मैं कैसे बोलता हूँ, मुझे क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो का टाइम ज़्यादा नहीं है ना, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं कोई वैसा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये करो वो करो। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब तब ज़रूर करना। बेशक अगर अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना, अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 9 बैंड स्कोर करने की जर्नी की ओर। तो एक सेकेंड, मैं कीवर्ड्स नोट्स बनाने के लिए मैंने ये रख लिया है पेज, और मैं अभी स्पीकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। So start speaking test. Welcome back. I hope you are ready for the test. ये मुझसे पूछ रही है कि वेलकम बैक, आई होप यू आर रेडी फॉर द टेस्ट। तो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ इसको। May I see your ID? Yes, sure. Here is my passport. You may have a look at it. Where did you go for your last holiday? Well, as of I remember, I had went to Delhi on my last holiday with my bosom friend. We explored variety of aesthetic cafes, went to nightclubs, and broadened our horizon too by visiting historical monuments. Overall, it was a magnificent experience for both of us. Do you like holidays? Why? Definitely, I love holidays, as I think that holidays are given to us by an employer or school or by government to relax and freshen our mind, and on several occasions. So I specifically spend holidays with my relaxing time with my friends, family, and talking with some awesome friend. Which public holiday do you like the best? Well, there isn't any specific public holiday that I like the best, but I think that the holiday that is given on the special occasion of Diwali, as it's an Indian festival, so I like it best, as those 2-3 days have a very festival vibe and all of the lights are lit around the world. So I think that it is the best public holiday. What do you do on holidays? There are different types of tasks that I can do on holidays, and I would specifically like to enjoy and relax on holidays. Tasks like visiting a cafe or a restaurant and going on late night walks, chatting with my bosom friends. So these are some activities I like to do on holidays. Now I will give you a cue card. अभी क्यू कार्ड And you स्टार्ट will get होगा, 1 minute for cue 1 मिनट card मिलेगा preparation. नोट्स बनाने के लिए, Then you have to speak for 2 फिर minutes. 2 मिनट के लिए बोलना पड़ेगा। तो अभी मेरे को टॉपिक देंगे। Describe the speech you gave, or describe the talk you gave to a group of people. When and to whom you gave the speech. What was the speech about? Why you gave the speech. How did you feel about it? स्पीच के बारे में, डिस्क्राइब अ स्पीच यू गेव और डिस्क्राइब अ टॉक यू गेव टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। हाउ डिड यू फील। तो 4 क्वेश्चन है, 1 मिनट मिला था, इसमें से 40 सेकंड 20 सेकंड ऑलरेडी निकल गए। कब दी थी? इट वाज अबाउट 2 months अगो। 7 नोट्स में हो। whom to college, it was college presentation. What was it about? प्रेजेंटेशन बता दिया मैंने। ऑन वुमेन एम्पावरमेंट,
वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थी. और हाउ डिड यू फेल्ट? वंडरफुल, amazing, flabbergasted by response. And why did you give it? क्योंकि टॉपिक मिला था. Cue card preparation time end now. Please speak your answer now. टाइम खत्म हो गया, स्पार्क आंसर बोलता हूँ. Well, as of I remember, I have only given one speech in my life till date. But that speech was given by me to a group of people. Especially they were my juniors or seniors in my college. It was about 2 months ago. I had given speech to a standing crowd, and all of them were my college mates. It was basically about women empowerment, and it focused mainly on how to empower more women to work in different fields and get a variety of ideas, and also to broaden their horizon. It was prepared solely by me, and I had burnt midnight oil to prepare that speech. I even did some rehearsals on it, and it was a very tiring process, but somehow I managed to write it and speak it in front of people. And it was a college presentation that was given by me, and I had also being assigned by my teacher. So I was flabbergasted after seeing the response. It was about 2 months ago, and all the audience was totally impressed after I gave the presentation and the speech. The speech mainly addressed that women should come out of their comfort zone, and also should be allowed by males and all the society members to work in different fields, get exposure, and also to enhance their speech level. And it was a total amazing experience, and I was on the 7th heaven as I received an award for giving that speech too, and all the judges were impressed by me, and they also gave me a medal that is surely stuck right now on this wall, and I would like to surely give a speech in the future too. Why do people get nervous when they speak in public? Individuals usually do get nervous when they speak in public places, as I think that they may be introvert, or they have not interacted with any of the individuals. Mostly they have interacted with their family members or their cousins, so they are not used to speak in public. So especially then they get nervous, or they can get nervous if they have some kind of social phobia and they don't want to interact with other people. They want to stay in their boundaries. So these are the reasons why people can get nervous when they speak in public. How can they improve their public speaking skills? Public speaking skills can be improved by a variety of ways, and those plethora of ways include by regularly trying to speak in public. If they are not able to speak, but they should at least try speaking in front of the mirror. They would be able to get better knowledge of where they are lacking, and it would develop a confidence in them. Also, they can record themselves in camera, which would help them to improve their public skills and speaking. So these are some factors considering public speaking skills. What different kinds of speeches or lectures have you attended in your life? Well, in my lifetime, I have not attended any speeches, but a lecture that I remember, it was given by my role model, Ashneer Grover. Basically, he is an industrialist and an entrepreneur too. I had visited to IIT Bombay 3 months ago. She was a guest speaker there, and he told about the technological developments and the advancement in artificial intelligence, and this was the lecture I have heard in my entire lifetime. What qualities should these visiting speakers have? These visiting speakers have a plethora of qualities, including they are hardworking and passionate towards their goal. They are motivated, so they can also motivate other individuals and tell a lot about them, their career journey. And one feature I would like to address is that these visiting speakers must be intelligent enough to tackle different kinds of audience, as they never knew what question is gonna pop up for the next time. So they must be prepared for that. So मेरा क्यू कार्ड इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन क्यू कार्ड एंड डिस्कशन पार्ट खत्म हो चुका है, अभी आंसर्स देखते हैं। मैंने क्यू कार्ड में ना एक गलती कर दी, 2-3 मैं बीच में स्टक हो गया था, मैं आइडिया कुछ सोच और रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा कुछ और मैं बोल कुछ और रहा था, तो इस कारण से मेरा क्यू कार्ड ठीक नहीं गया इतना। बाकी डिस्कशन एंड इंट्रो पार्ट अकॉर्डिंग टू मी ओके से थोड़ा सा ऊपर गया है। अभी मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो नोट्स में लिखा था when, whom, what was the speech, why and how did you feel। तो मैंने लिखा 2 महीने पहले, 2 months ago कॉलेज जो प्रेजेंटेशन थी, तो क्या कहते हैं कॉलेज प्रेजेंटेशन थी, फ्लैबरकास्टेड मींस सरप्राइज्ड, इससे नाम है उसका गुड वर्ड से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर थे। दिस टॉपिक वुड इंटरेस्ट द एग्जामिनर। Congratulations on completing the test. टेस्ट कंप्लीट हो गया। अभी You will increase your बैंड्स नहीं chances of बताते passing हैं, from 50% to 99% if you practice 2 to 3 speaking tests every day. आई नो कि मेरे If बैंड्स you want कितने to check आएंगे, the band score for speaking tests, इसके अगर मैं ये स्पीकिंग देता then हूँ by तो मेरे membership, कितने बैंड्स आएंगे। आई कैन keep श्योरली up the good work. ये 6.5 बैंड्स वाली स्पीकिंग है, इससे ऊपर की स्पीकिंग नहीं है। ये 6.5 बैंड्स आएंगे अगर मैं ये बोल के आता हूँ तो, क्योंकि मैंने अभी काफी टेस्ट ले लिए, मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है कि इतने ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं आ सकते स्पीकिंग में। एंड मे बी 6 भी आए, मे भी 6 भी आ सकते हैं, क्योंकि इट वाज ओके एंड क्यू कार्ड कुड बी मोर इफेक्टिव, आई थिंक दैट। सो हाँ 6.5 के अराउंड। मैंने 7.5 8 बैंड्स वाली भी स्पीकिंग दी हुई है, 8 बैंड्स तक वाली स्पीकिंग भी मैंने दी हुई है। एंड एट टाइम आई वाज टू गुड, बट मैंने बीच में 15-20 दिन का ब्रेक ले लिया था, सो अभी मैं वापस रिज्यूम किया तो थोड़ा इशू आ रहा है, बट श्योरली आई विल बी ऑन ट्रैक सून। देखते हैं कितनी स्कोर आई है। मैंने स्पीकिंग तो मॉड्यूल तो हो गया अपना, लेट्स सी। मतलब स्कोर नहीं पता लगेगी, वो इमोजीज के थ्रू बता देते हैं कि कैसा गया आपका ये टेस्ट। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन 1 जो है वो मतलब सही गया एकदम, जैसे उसे कहते हैं ना पार्टी वाला इमोजी है, उसके साथ डू यू लाइक हॉलीडेज और पब्लिक हॉलीडे वाला जो क्वेश्चन है उस पर ऐसे थंब मार के, मतलब इट वॉज गुड, नॉट टू गुड, इट वॉज गुड। एंड फोर्थ क्वेश्चन भी टू गुड, फोर्थ क्वेश्चन टू गुड था। क्यू कार्ड में भी मेरे को ऐसे ही मिला है कि गुड, नहीं तो मेरे को आगे क्यू कार्ड्स में ऐसे मतलब जैसे एक इमोटिकॉन है ना, इसमें फेस से आपका क्या कहते हैं मतलब धुआं निकल रहा होता है, वो वाला था कि इट वॉज टू गुड, टू गुड वाला, बट वो नहीं मिला। हाँ एक मेरे को सारे जो डिस्कशन क्वेश्चन है उन सब में मेरे को ऐसा ही मिला है गुड गुड गुड, नॉट टू गुड। एंड इवन आई नो कि मेरा ये वाला क्यू कार्ड इतना अच्छा नहीं गया था, रिकॉर्ड करने से पहले मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस की थी, वो वाला क्यू कार्ड मेरा काफी अच्छा गया था। बट यहाँ कैमरा के सामने भी होता है, बट मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, दिस क्यू कार्ड मैंने अपना मतलब 100% नहीं दिया, ये मेरा अच्छा पार्ट नहीं हुआ क्यू कार्ड, बट मैं आगे से जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। एंड एक क्वेश्चन है जो व्हाट क्वालिटी शुड दिस विजिटिंग स्पीकर्स हैव, इसमें मेरे को मिला है पूरा मतलब फेस में माउथ में से जो फ्लेम्स निकलते होते हैं वो वाला। मैंने इसका आंसर बोला था कि व्हाट क्वालिटी शुड दिस विजिटिंग स्पीकर्स हैव, इसका मैंने बोला था these विजिटिंग स्पीकर्स हैव plethora of qualities including they are hardworking and passionate towards their goal, they are motivated so they can also motivate other individuals and tell a lot about them, their journey and their future. And उसके बाद मैंने बोला था I would also like to address that these visiting speakers must be intelligent enough to tackle different kinds of audience as they never knew what question is going to pop up in for the next time in front of them. तो इस पे मेरे को काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। So this is for the speaking part। अब मिलते हैं अपनी अगली राइटिंग की वीडियो में।